introduction. Okay, these are these 8 instructions that we are having and we are going to follow throughout the whole class. The first one says you will be when it is necessary. पहला कहता है कि आप अपने आप को तभी अनम्यूट करेंगे जब जरूरत होगा. After giving the permission, there is nothing as such like you all be in the unmute mode, like you are sitting in a very quiet place and you are unmuting yourself without any such kind of a reason. Not at all. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप एकदम शांत जगह पे बैठे हैं तो फिर हम अपने आप को अनम्यूट करके ही रख रहे हैं और चीजें एकदम अनम्यूट मोड पे चल रही नहीं. आप अपने आप को म्यूट मोड पे रखेंगे. जब जरूरी होगा, जब क्वेश्चन पूछना होगा तब आप अनम्यूट करेंगे और क्वेश्चन पूछने के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा. ऐसा नहीं है कि जब हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप बीच में आ रहे हैं कि सर हमको ये चीज पूछना है, हमको ये चीज जानना है. नथिंग लाइक दैट. There will be nothing as such कि when I am elaborating something, when I am explaining something and you are coming in the middle like sir I want to have this query. If you can't hold your query, please type it in the chat box. Okay, because the interruption in between the explanation or elaboration may lead towards your loss. Why? Because there is one temper which says in the explanation what point we have to cover, what are the things that we are focusing. That is it. Okay. No need to turn on the camera. कोई भी कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है. आपका कैमरा कंप्लीट ऑफ मोड पे रहेगा. Your camera is like going to be complete on the off mode. You can be comfortable as you are. Nothing as such कि turn on the camera or you have to sit in front of the camera. कोई ऐसा जरूरत नहीं है. कैमरा ऑन करके ही बैठना है, उसके सामने बैठना नहीं. After joining the class, make sure your camera is on. क्लास ज्वाइन करने के बाद आप एक बार अपने आप से इंश्योर कर लें कि आपका कैमरा ऑफ है. ओके, इंस्ट्रक्शंस हो गई है. मेक श्योर योर कैमरा इज नॉट ऑन. आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपका कैमरा आपके साइड से ऑन नहीं. नो पीडीएफ एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल प्रोवाइडेड. कोई भी हमारे एंड से पीडीएफ रिकॉर्डेड लेक्चर या फिर पीडीएफ सेक्शंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे. If you want to record the sessions, if you want to take the screenshots, you are allowed for that. The recording only with the third party application, not over the Zoom. जो रिकॉर्डिंग होगा वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से होगा, जूम पे नहीं होगा. ठीक है. आपको अपने साइड से रिकॉर्ड करना है, आपको अपने साइड से स्क्रीनशॉट्स लेना है, नोट डाउन करना है. यू आर फ्री फॉर यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स. जो भी चीजें यहाँ चल रही हैं आप अपने आप नोट्स अपना खुद से प्रिपेयर करते रहें. एंड द थिंग इज कि above 2 says the explanation and the fifth point is really the thing is you have to attend the class. It's mandatory for it and also need to be proper. ठीक है. आपको क्लास स्टार्ट अटेंड करना जरूरी है, मैंडेटरी है सबके लिए और प्रॉम्प्ट भी रहना है. द सेंस इज कि दिस इज नॉट योर बीटेक क्लास. माइट बी सम पास आउट फ्रॉम द बीटेक और सम लाइक फ्रॉम द कमिंग बैक फ्रॉम द बीटेक. कुछ बीटेक पास आउट कर लिए होंगे, कुछ जॉब में भी होंगे, कुछ तीनों का चल रहा होगा. दोज हु आर परसुइंग द बीटेक. सो देयर इज नथिंग एज सच
कि this is your BTech class. No, everything over here will be discussed on the basis of job. सारी चीजें यहाँ पे जॉब के बेसिस पे डिस्कस की जाएंगी. जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का वो 1 वीक का होगा. द कोर्स ड्यूरेशन इज 1 वीक. द लेंथ ऑफ द सेशन इज up to hours. We are going to study this N plus for 2 hours. हम लोग N plus 2 घंटे के लिए पढ़ेंगे. And the mode is going to be English and Hindi both. जो मोड होगा इस सेशन का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा. Nothing to such. और everyone will wait for their own turn. सारे लोग अपने अपने टर्न का वेट करें. Nothing as such कि sir please explain in Hindi, please explain in English. Nothing as such. I will repeat the topic in 2 terms. First English, second Hindi. Wait for that. कोई भी टॉपिक होगा हम 2 बार रिपीट करेंगे. एक इंग्लिश में, दूसरे हिंदी में. सब कोई अपने अपने टर्न का वेट करेंगे. And my name is आर्यन श्रीवास्तव. You are going to study the N plus with me. मेरा नाम आर्यन श्रीवास्तव है और मेरे साथ आप 1 वीक के लिए ये N plus पढ़ेंगे. Now I give you the unmute permission. You can ask your queries. अब हम आपको unmute permission दे रहे हैं. आप अपना query पूछ सकते. Yes, Minky. No, sir, no question. Very well. Hi, Aaron. This is Obed. Yes, Obed, tell me. Actually, I just want to know the timings and all. Why? Because yesterday, Dipti told me to join at 8 o'clock, so I joined at 8 o'clock. There was no classes yet. Okay. Obed, you are from admin point. Yeah. You are the admin in envision. No. I'm not getting you. Yes or no? I'm not getting you, man. My point is, are you from admin department from envision? Admin department, no. I have joined the internship course. Internship course. And who am I over here? That is like Dipti. Sorry? Dipti. No. Who am I over here? You are an Aryan. It's just a sir. Trainer. It's just a sir. I'm not your friend. I'm not your anything. You're not from the admin department who is going to point it my with the name Aryan or anything. Okay. Probably you can say Srivastava or you can simply say sir. That is far better in telling the name. Yes, sir. Okay? Yeah. Very well. Now, the query related to your timing, please refer to the admin. They will rectify all your class. And this class timing that we are going to study over here is 10:30 to 12:30. Okay, sir. Okay, sir. जी sir. Yes, Kaushik. Yes, sir. Kaushik Chaudhary. Yes, tell me. Yes, sir. क्लास यही टाइम में रहेगी अर्जुन सर. हाँ, हमेशा यही टाइम पे रहेगी 10:30 AM to 12:30 AM. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Very good. Any more queries from anyone? किसी को और कुछ पूछना है यहाँ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड? Sir, hello, sir. Yes, please. सर जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो 1 वीक का बताया गया है. देन उसके बाद भी हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होगा. बिल्कुल होगा. आपका ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं ये N प्लस आपके साथ 1 वीक तक चलेगा. इसके बाद और भी हैं आपके. तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स आपके कोर्स डिजाइन किए गए हैं. सो ये फर्स्ट स्टेज है आपका. तो फर्स्ट स्टेज में हमारा N प्लस होता है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर कर दीजिए. तो सिर्फ आप N प्लस 1 वीक के लिए पढ़ेंगे. 1 वीक बाद फिर मंडे से आपका नया बैच शेड्यूल हो जाएगा नई टाइमिंग के साथ. सो यू विल बी गेट नोटिफाइड. आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा. ओके सर. सर ये जो ड्यूरेशन कोर्स का होगा वो कितने मंथ का होगा फिर भी? देखिए ये मंथ का क्या होगा ये सब आउट ऑफ द बॉक्स है. ये मेरे रेंज के बाहर है. सो इन सारे जो कितने मंथ का होगा उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, क्या प्रोफाइल होना चाहिए, इससे रिलेटेड आप एडमिन से बात करें तो वो आपको ज्यादा प्रेफर कर पाएंगे. यहाँ पे आप अपने इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टर्म से रिलेटेड कि क्या होगा क्या नहीं होगा उससे रिलेटेड ज्यादा पूछेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे. ठीक है सर. थैंक यू. Anything else? Shall we start, guys? Yes, sir. Yes, sir. Very well, guys. Yes. सर यहाँ सर अरे यार
क्यों वो क्या हो गया ये? In progress. Wait minutes. So let's start our N plus. Okay. Okay. So before going to any another point, let's have the term ki what we are going to study in this N plus. Why N plus we are starting over here, and what is the thing revolve around all those things. ये N plus है, ये तो इंस्ट्रक्शंस हो गया, हमारा इंटरेक्शंस हो गया, ये सारी चीजें हो गई. लेकिन अब क्या बात है कि ये N plus ही क्यों? हम स्टार्ट N plus से ही क्यों कर रहे हैं? हमारे बेसिक्स यहाँ से ही क्यों कवर अप हो रहा है? Why this? Okay. So let's have the term. So N plus is, it includes complete basics of networking. Okay. ये जो N plus है, ये complete आपके networking के basics को include करता है. Basics means complete basics. 80% from the cloud development operations. These are the three measures. Okay, sir. They don't know how to deploy, they don't know how to work. In progress. So working architecture point of view, अलग पैरामीटर होता है, and basic point of आप चीजों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आखिर प्रोसेसेस हो कैसे रही, नॉट दैट मच डीप, जस्ट द अपर लेयर. आपका प्रोसेसेस हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाई वी आर डूइंग दिस ऑल द थिंग्स, दैट इंक्लूड्स द बेसिक. ये इंक्लूड करता है बेसिक. दैट द टर्म सेज बेसिक्स. ये टर्म कहता है बेसिक्स. लेट्स हैव द सिलेबस ओवर हियर. This is the syllabus of NPS, and there is a one note point.
note point says the topic is may vary. May vary why? Might be it depend upon us. Okay, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीजों को कैसे लेके जाए. But till the day 6 like on the Saturday we will be finishing all this topic. Saturday तक हम इन सारे topics को finish करेंगे. Okay. So the thing is, sir, you said on the day 2, day 3 that you will start the cable, you will discuss the cable, but you just ended the day 2. आपने कहा था कि आप day 3 में आप upon your query. ये आपके ये हमारे explanations के ऊपर, ये हमारे आपके queries के ऊपर, discussions point of view के ऊपर से depend करता है कि हम चीजों को कैसे लिखें. So that is the thing says the topic days may vary. इसलिए मैंने बताया the topic days may vary. Might be we can complete the topology on day 3 only. हो सकता है कि day 3 को ही हम अपनी topology को finish up कर लें. We are starting day 4 on the fresh OSI model. हम day 4 को ही fresh OSI model को discuss कर रहे हैं. And sometimes in the some sessions happens like over the day 5 we are finishing all the things. कभी-कभी क्या होता है कि कुछ sessions को complete करते हैं. So it actually depend upon us. So that is the sense. That is why I said please be prompt over here. Then what I can give you अगर आप क्लास मिस करते हैं तो क्या हो सकता है सिर्फ हम आपको क्या टॉपिक है क्या डिस्कस I can give you the terms. हमारे पास 2 या 3 वीक नहीं है कि मैं आपको पूरा सारी चीजें दे सकूं, but I will try to do the things. Okay. And this is the thing, guys. Any queries over here? यहाँ तक भी किसी को कुछ पूछना है? में भी और मुझे पढ़ाने में भी ट्रेनिंग देने में भी. So let's start the term. So as I know you all are aware with the things कि what is going to be the next thing. We are studying the N plus. हम लोग N plus पढ़ रहे हैं और लगता है कि सारे लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अब क्या लिखने वाले हैं. So every time when we start from the term we say there is a one question. What is network? What is network? यहाँ पे हमेशा से एक टर्म आया है कि नेटवर्क क्या है, राइट? हम लोग नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं. सो पहले इस बात को डिस्कस कर लें कि नेटवर्क क्या है. एनीवन, व्हाट इज नेटवर्क? डजंट मैटर गोइंग टू करेक्ट रॉन्ग, डजंट मैटर. इन माय क्लास देयर इज नथिंग एज सच. आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट, व्हाट इज गोइंग टू नो. आई वांट टू नो व्हाट इज द थिंग फ्रॉम योर साइड. हमको ये जानना है कि आपके साइड से क्या पॉइंट है इस टर्म को लेके. व्हाट इज नेटवर्क? कम वन बाय वन. Shalan? यस, बताएं. Sir, it's a path which is help to connect two ends. That two ends may be vary every time. Very well. Sir, Very nice, not bad. Sir? Yes. Connection between two server is called network. Connection between two servers is called network. Okay, very well. Exchanging of the data from one end to another end Sharing of the data from one end to another end is called network. is called network. Okay, very well. It is used to transfer data and information from. Sorry. Network is to connect different entity. Okay, very well. Yes, please. Connected computing device that can exchange data and information from one end to another. Okay, very well. So it is a physical device that allow hardware on a computer network.
It is a physical device which allow hardware to connect the computer networks communicate to interact with another. Okay, very well, very nice. Very well. Anyone else? था बोल दिए बड़े बड़े कुछ नहीं No one? चलेगा Okay. अभी Just from my point of view, you all heard each and every differentiations. You all heard each and everyone said about the network. Can anyone can tell me what is the common point in between them? सारे लोगों ने अपना अपना कनेक्शन सारे लोगों ने अपना अपना एक्सप्लेनेशन दिया, सारे लोगों ने अपना अपना टर्म दिया, बताया, उसमें से सबके टर्म में से कॉमन पॉइंट क्या था? Connection of devices. Connection of devices. Connection. Correct. So what does the network actually mean? The network actually means the connection, the connector. Connection not between the people, not between the devices, between the people as well. Connection सिर्फ हमारे devices के बीच में नहीं, हमारे लोगों के बीच में. Just like me and you, we all are connected. That is called a network. What does the actual network means? Means the connection. आखिर network का मतलब क्या है? Network का मतलब है connection. This is the thing. And for establishing the network, we need to share some kind of the information. अब connection establish करने के लिए हमें कुछ ना कुछ information share करने की जरूरत पड़ती है. That is what is called कुछ information. Mark the things. Some information. Okay. Some information. Why there is a necessary to share the some information? वहाँ पे जरूरी क्यों है कुछ information को share करने की? Anyone? To make a strong bond between two devices to other people. To make communication. to sending data from one person to another For sharing data to one person to another. Very nice. through internet. It's called network. Through internet is a network. Okay, very well. Data through a medium is called networking. My question is not that. My question is कि why there is a need to share the data? हमें डेटा शेयर करने की जरूरत क्यों है नेटवर्क एस्टैब्लिश करने की? To gain some information. To gain some information, to establish the proper information, proper connect. Like if I say you are getting a call, अगर हम ये बोले कि आपको एक कॉल आ रहा है, the call you are getting, no caller ID, no name, nothing, just two option, accept or decline. आपके पास एक कॉल आ रहा है जहां पे सिर्फ दो टर्म है, accept या decline. What you will do? You're nothing. You're not having any kind of the point. आपके पास ना नंबर है, you're not having the displayed over your number. You're not having any kind of the from where you are getting the call, who is calling. You're not getting anything. Decline. You will decline. Yes. Decline. You will not going to feel comfortable while accepting that particular call. आप एकदम comfortable feel नहीं करेंगे कि हम उस call को accept करें या नहीं. Same as with your. Just a moment, guys. Just a moment. Just allow me for 5 minutes, guys. Just for 5 minutes. Take it. Network. What is network? सही है नेटवर्क.
What is network? Here's a summary from Indeed. Here are 11 types of networks: local area network, personal area network, wireless local area network, campus area network, Group of metropolitan area network, interconnected nodes. wide area network, Static storage area connection. network, passive optical local area network, Extra data and and more. resources with each other. Network connection between these devices can be established during cable or wireless media. The network group of two or more computers to other electronic devices that are interconnected for purpose for exchanging data and sharing services. What is network? नहीं भेज सकते, देखते थे भाई कौन है। नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क भाई? दिन की नेटवर्क तो पड़ा ही नहीं। दिन का भूख लग गई भाई, खाना खाऊंगा। श्रद्धा सेप्टिटी और फॉलोइंग रिक्वेस्ट। So these are. So हम लोग बात कर रहे थे connection के ऊपर. We were discussing about the connection. So this is the thing. So right now, if I say we are over here, right now if I say we are over here, how we are over? यहाँ पे हम कैसे? Like if I haven't shared my link with you all, then how you are going to attend the session? अगर हम आपके साथ ये link share नहीं करते तो आप कैसे इस session में connect हो पाते? नहीं हो पाते. Not possible. If I say कि you are like you are getting a friend request or a follow request from somewhere, someone else, no display, no DP, no name, nothing bio, again two option, accept and decline. फिर आपके पास एक फॉलो रिक्वेस्ट और एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का एक टर्म आता है जहाँ पे आपके पास कोई डिस्प्ले पिक्चर नहीं है, कोई नेम नहीं है, कोई बायो नहीं, कुछ नहीं है, नो म्यूचुअल्स, नथिंग एट ऑल, कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ दो टर्म है, एक्सेप्ट और डिक्लेयर, एक्सेप्ट और कैंसिल. दैट इज अ थिंग. So for going for someone connected, for anything get connected, we need to share some information, only some information. Okay? कोई भी चीज कनेक्ट होने के लिए, किसी भी चीज के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क. एंड नाउ लेट मी राइट इट डाउन. The connection between the node and the node or the people which help to send them the information. Internet.
मैंने ठीक बोला था, थोड़ा सा नोड नहीं बोला, नोड इंटरनेट पीसी लैप नोट, ठीक है ना, पीसी नोड मतलब पीसी लैपटॉप मोबाइल फोन एनी थिंग्स that help us to establish connection. Okay, so this is the point. Okay, after that, what is networking? After that, हमारे पास क्या है कि networking क्या होता है? So in the networking, the complete exchange, the confusion होता है। के ऊपर अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो फिर हम उसको नेटवर्किंग क्यों वी नीड टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, यू कांट टॉक टू दोज पीपल हुज नेम यू डोंट नो। आप उन आदमी से, आप उस पर्सन से कभी बात ही नहीं कर सकते जिनका नाम आपको नहीं पता हो। इफ आई डिडंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इफ आई डिडंट टेल यू कि हाउ द क्लास इज गोइंग टू बी, अगर हम आपको नहीं बताएं कि हम कौन हैं, आपका क्लास कैसे चलेगा, विल यू फील कंफर्टेबल इन आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, विल यू फील लाइक व्हाट इज दिस थिंग इज गोइंग ऑन, आपको पता चलेगा कि ये चीजें क्या चल रही है? नॉट एट ऑल, दैट इज अ थिंग। एंड द नेटवर्किंग सेज once the connection got established and whatever the stuffs you are doing over there, हाईवे नेट का ना होता कभी progress, that is also a kind of networking, वो भी एक तरीके का नेटवर्किंग है। The term never says, the term never confuse कि what is network and networking, just the point confuse, that is the information। टर्म कभी कंफ्यूज नहीं करता है कि आपका नेटवर्क और नेटवर्क क्या है, आपके पॉइंट कंफ्यूज करते हैं, दैट इज योर वर्ड इंफॉर्मेशन। वो जो एक वर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन। ओके, सो एवरी टर्म रिमेंबर गाइस, हर जगह पे आप याद रखेंगे, किसी से भी कुछ भी करने के लिए, वट एवर थिंग्स यू आर डूइंग विद पीपल और डिवाइसेस, यू नीड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। And after information, after getting connected, you do whatever the steps you are doing. आप उसके ऊपर कुछ भी कीजिए, वो एक टर्म नेटवर्किंग कहते हैं। ओके, सो द नेटवर्किंग से is the complete exchange of information and ideas among ये कुछ
कुछ एग्जांपल्स, दिस व्हाट इट इज. And now here the point comes कि sir why you have written the very basic example, very basic definition. आपने काफी basic definition लिखा है, ये सबको पता होता है. ठीक है. The term says those who belong from the IT term, those who are having a technical background, जिनके पास IT term है, जिनको technical background पता है, they are familiar with all those things. वो इन दोनों चीज से काफी अच्छे से familiar होंगे और whatever the things we are going to discuss further, और जो भी चीज हम लोग आगे discuss करने वाले. But this term is very difficult for those who belong to non-IT background. वो ये जो दो term है, वो उन लोगों के लिए काफी difficult होता है जो non-IT background से belong करते हैं. So that is why have the thing very basic, understand the portion and explain it in your own way. चीजों को समझे, easy तरीके से समझे और उसको फिर अपने टर्म पे एक्सप्लेन करें. That is a very good. इतने नेट की चक्कर मत कर बे, धूप में ही रहता हूँ. एक डल गया बे. आजा रे, ठंडा हो गया था रे तू तो, अब यहाँ जरा गरम हो जा रे. In progress. Foundation on the basis of some experiments. चीजें यहाँ लिखी है वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के टर्म पे, किसी ने डिलीवर किया उसके टर्म पे. What you are understanding from this point? आप इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हैं? That is the main point. Okay. That is the thing we need to figure it out. ये चीजों को हमें figure it out करना है. After that everything is quite simple. इसके बाद सारी चीजें काफी simple. Now, is these 2 points are clear to everyone? ये दोनों समझ में आए? Any sort of the queries? Yes, sir. Yes, sir. Yes, please. Yes, sir. Very well. So now, there is a one thing. If the thing is clear, the question: why we need network and network? हमें नेटवर्क और नेटवर्किंग की जरूरत है. Anyone? Sir, for sending data. For sending data, very nice. Network is only for sharing data and networking is working together. Network is for sharing data and networking for watching the things together. Okay, very well. Okay, let me make it more clear. हम चीजों को और क्लियर करते हैं. Why you all are enrolled in this course? आप लोगों ने अपने इस कोर्स में क्यों enroll किया? The purpose for getting a good career, for purpose for getting a good job, or for purpose for getting a good height, right? यहाँ पे हम लोगों ने कोर्स में इसलिए अपने आप को enroll किया है. Sure. Yes. Enroll किया है. क्यों? क्योंकि हम एक जॉब ऑक्यूपाई कर सके, हमारा अच्छा कैरियर हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, साथ ही साथ कोई समझ मिस्टर कुमार स्वरूप, कैन यू प्लीज अपने को म्यूट कर सकते हैं प्लीज? हेलो. यस सर. यस. जी बताएं, आपको कुछ पूछना है? नो सर. प्लीज आप म्यूट कर लीजिए. व्हाटएवर यू एक्सप्लेन दैट्स सो आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज प्लीज. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो ओवर हियर व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि हम लोगों ने इस चीज को क्यों अडॉप्ट किया. हमने इस चीज को अडॉप्ट किया कि हमारा एक गुड कैरियर हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे पोजीशन पे जा सके, और कुछ लोग होंगे जो वर्किंग प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे होंगे, तो सर हमें कुछ अच्छे हाइक चाहिए क्योंकि अभी जितना है उसमें काम नहीं चल रहा. दैट इज द. सो इन दैट सेम वे व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द नीड ऑफ नेटवर्किंग ओवर हियर. यहाँ पे हमें नेटवर्क और नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ी?
Anyone? Proper communication within an organization. Nice. To performing on the company. To connect a strong bond. Just a second. Both of you be on the unmute. आप लोग दोनों अपने आप को unmute रखेंगे? Yes, Ankit. Yes, sir. To establish connections, to share the information, like you are sharing some information with us, to so that the need here to of network or networking. Very well. Yes, Chaudhary. Yes, sir. To getting knowledge Yes, Kaustik about. Chaudhary. Sir, to get knowledge about this. Okay, no problem. Nothing else. So this is what you said. This is what you all said, right? The term network and networking. इन चीजों के बारे में आपने बताया network और networking. So the thing says now just have the visuals in your mind. अब एक visuals आप अपने आप अंदर एक visual से represent करें. The thing is कि you are sitting in a group. आप एक group में बैठे हुए हैं. The person who is just sitting next to you is not feeling that much comfortable. जो आपके just बगल में बैठा हुआ है वो आपसे comfortable नहीं है. Okay. Will you able to pass any set of the information to them, any set of data, anything you can ask from them, from him or her, जो भी आपके बगल में बैठा है, क्या आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं या कुछ भी मांग सकते हैं? If he or she is not feeling comfortable with you, अगर वो आपसे comfortable नहीं है तो is that? No, sir. Yes or no? No, sir. No, nothing as such. No, sir. Nothing as such. ऐसा हो ही नहीं सकता है. क्यों? Our connection is not made good. हमारा जो connection है वो सही तरीके से establish नहीं है. In the same way, same thing happen with our devices as well. Same चीज हमारे devices के साथ भी होता है. ठीक है? Sometimes if you insert a pen drive in your laptop and the pen drive is not inserted well, it is not going to recognize and you will say, hey, I inserted the pen drive but still it is not fetching the things. आपने पेन ड्राइव लगाया और पेन ड्राइव लगा भी लिया लेकिन फिर भी आपका सिस्टम जो उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है. आप ये बोलेंगे यार मैंने तो पेन ड्राइव लगाया लेकिन डिटेक्ट नहीं कर रहा. लगाया तो है, क्यों? The thing is you didn't inserted the pen drive in that port well. आपने उस पोर्ट में पेन ड्राइव को सही तरीके से इंसर्ट नहीं. That is the term. So every time the network and network नेट कहाँ का क्या नाटक है यार. नेट नहीं मिल रहा यार तो नेट की भी प्रॉब्लम है. In progress. or network for the establishment. Good. And at the place of each other, you can place whatever the thing you want.
और प्लेस ऑफ ईच अदर पे आपको जो मर्जी आए वो प्लेस कर दो, नथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम. Sharing data, doing video call, establishing connection with organization, making a phone call, whatever the thing is. अब आप इस पॉइंट के ऊपर जो at a place of each other है, यहाँ पे आप कुछ भी प्लेस करो. At the point of each other, you can place whatever the thing you are looking for. But make sure you made a statement, establishment of good and proper communication. अलाहटी जाना पड़ेगा यार मेरे को, यहाँ तो रहना मुश्किल हो रहा है. Where they got developed, from where they are coming. ये कहाँ पे develop, कहाँ पे इनका origin हुआ, कहाँ पे ये सारी चीजें हमारे टर्म पे आई, कैसे. इतना नाटक है यार नेटवर्क का यार, ये तो साला बेटी जम जम के चलता है साला, कभी कभी तो जीबी जीबी पकड़ता है. यहाँ रखता हूँ, थोड़ा सा आएगा. Recording progress. आप जो भी चीज अपने फोन पे कर रहे हैं, जो भी चीजें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, सेम चीज आप अपने रियल लाइफ में कर. में करते हैं, जो भी चीज आप अपने रियल लाइफ में करते हैं, सेम चीज वहीं से डिलीवर होके आपके इंटरनेट वर्ल्ड पे होती है. द थिंग इज डिफरेंट, बस फर्क इतना सा है, ओवर द वेब पर्सन हु इज, और इंटरनेट पे आप क्या कर सकते हैं, बात जो आपके अनदर कंट्री में जो आपका फ्रेंड है, आप उससे बात कर सकते हैं. दोनों चीजें सेम है, but the difference is you are physically talking to your neighbor, now you are having connection to the overseas. पहले आपके पास सिर्फ आपके पड़ोसी के साथ कनेक्शन था, अब आपके पास ओवरसीज का भी कनेक्शन है. That is the thing. The thing got generated from there only. चीजें वहीं से डेवलप हुई. So this is the point. So whatever the thing says over the internet, whatever the thing says over the network and networking, they just belong to our real life. जो भी चीजें हम नेटवर्क और नेटवर्किंग में करते हैं, वो सारी हमारे रियल लाइफ से ही कम होती है. Oh, yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very well. So now we are discussing about from where they came. So at the time of like over the king or the kingdom establishment, they are having their own location terms होते हैं made of. If you are using the sign language to communicate, अगर आप अपनी sign language use कर रहे हैं किसी के साथ communicate करने के लिए, that is also a kind of network. वो भी एक तरीके का network. So not go that हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाते. Just go in the year of 1940s and all. हम ज़्यादातर अगर हम 1940s के बारे में बात करें, so